Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. Today we will discuss ribosome and mitochondria. These two cell organelles, their structure, occurrence and function. Before going to discuss ribosome and mitochondria, I would like to tell you about your PA1 exam. The pattern of question paper and syllabus. As you know that syllabus is chapter 1 and mainly questions are asked from prokaryotic cell or feature of prokaryotic cell, animal and plant cell, figure of animal and plant cell, discovery of cell, who discovered the cell, who discovered nucleus, cell theory, सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे फाइंड इन योर क्वेश्चन पेपर. योर क्वेश्चन पेपर कैरी टोटल 40 मार्क्स. क्लियर? मीन्स आपका जो पेपर होगा वो 40 नंबर का होगा. उनमें से जो है 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. बायोलॉजी आपका 14 मार्क्स का होगा, 14 नंबर का, एंड 13 मार्क्स के जो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेंगे. क्लियर? अब मेरे केस में बायोलॉजी तो 14 मार्क्स में आपके 6 क्वेश्चन क्या रहेंगे, 1 मार्क्स के. 1 क्वेश्चन रहेगा आपका 3 मार्क्स का एंड 1 क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का. क्लियर? मीन्स 6, 3, 9 एंड 5, 14 मार्क्स. इसी तरह आपके जो है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी रहेंगे. उसमें क्या रहेगा, 5 मार्क्स का आपका नहीं, 1 क्वेश्चन के 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन रहेंगे एंड 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन में 13 मार्क्स ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री रहेंगे. 13, 26 एंड 14, 40 नंबर के आपका पेपर जो है PA1 होगा. क्लियर? तो टोटल आपके जो है 16 क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के होंगे. 3 क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होगा और 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे. ये टोटल पेपर का पैटर्न है. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है. राइबोसोम्स ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनली है जो कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है और इसमें जो है इसके चारों तरफ कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. क्लियर? राइबोसोम डज नॉट कवर बाई एनी मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स आर विदाउट ए मेम्ब्रेन. बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज ऑल्सो फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल. लेट अस स्टार्ट. occurrence. Ribosomes are spherical and granular particles which are dense. They are found in both eukaryotic and prokaryotic cell except in mature sperm and mammalian red blood cells. Structure. Ribosomes are extremely small and round bodies. They are composed of ribonucleic acid and proteins. Ribosomes are not bounded by any membrane. Clear? Means राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता है. In prokaryotic cell, ribosomes are found free in the cytoplasm. In eukaryotic cell,
They occur either free in cytoplasm or found attached to outer surface of the rough endoplasmic reticulum. Function: ribosomes are the site of protein synthesis in a cell. Hence, they are also known as factory for the synthesis of protein or protein factory of the cell. Next cell organelle, that is mitochondria. Occurrence means कहाँ पाया जाता है. Mitochondria are found in all aerobic eukaryotes and absent in mammalian red blood cells, aerobic protozoans and prokaryotes. Structure: mitochondria are small granular bodies of varying shapes, rod shape, cylindrical shape, spherical shape. They are thread-like organelles. The number of mitochondria varies from cell to cell. Each mitochondria is bounded by a double membrane, an outer membrane and inner membrane. The inner membrane is selectively permeable to the molecules. It is pushed inward at intervals into matrix, forming cristae or finger-like processes called cristae. Cristae increases the surface area of inner membrane several times than the outer membrane. The mitochondrial matrix contains protein, lipid, circular DNA and RNA. The inner membrane contains ATP synthesizing machinery called oxysome or F1 particle or elementary particle. Mitochondria are semi-autonomous as they can synthesize some of protein by themselves and multiply by division. Clear? Only two cell organelles are semi-autonomous bodies. First one mitochondria, second one plastid, because they have their own genetic material. Function of mitochondria. Mitochondria are site of cellular respiration. They are minute biochemical factories where food molecules are oxidized into carbon dioxide and H2O and energy is released. This energy is stored in the form of ATP. The ATP synthesized inside mitochondria provides energy for all the cellular activities. Hence, mitochondria are also known as powerhouse of the cell. They help in the synthesis of several biochemicals like cytochromes, steroids, fatty acids, chlorophyll and phospholipids. Clear? This is about ribosome and mitochondria. Let us know who discovered the ribosomes. Ribosome was discovered by Emil Pallade. Emil, E-M-I-L, Emil Pallade, P-A-L-A-D-E. Altman discovered the mitochondria. And who discovered the endoplasmic reticulum? Ernest Fullman, Porter and Claude discovered the endoplasmic reticulum. Clear? We will discuss Golgi bodies in our next lecture. Okay, thank you.